Hey guys, welcome to Gyan4media, and I'm Kritika. I hope you all can see me well. Okay, so well, preparing well for your exam, and all set for today's MCQ session, which is on advertising and PR. Some of you requested me to take up questions on advertising and PR. So here we are with the MCQs on advertising and PR. So I'll put on the question on you और आप मुझे answer बताएंगे. You can post your answer in the comment section. And today screen sharing is not working. The technique for screen sharing ठीक से काम नहीं कर रहा है. तो I'll be posting questions on the comment section नीचे और उसके 4 ऑप्शंस भी मैं पोस्ट करूंगी. आप उसमें से क्वेश्चन देख करके ऑप्शंस देख करके मुझे आंसर बताएंगे. और हम लोग आज डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग एंड पीआर के क्वेश्चंस को. तो शुरू करें या शैल वी वेट फॉर सम मोर टाइम टू अदर्स टू जॉइन. और मुझे बताइएगा कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है. कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको दिक्कत आ रही है पढ़ने में, क्योंकि यू नो कि मास कम्युनिकेशन का कोर्स बहुत वास्ट है यूजीसी नेट का. इनफैक्ट पेपर 1 इज ऑल्सो इलैबोरेटेड, तो काफी आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी इन दैट सेंस. सो just do let me know कि what are the topics जिसमें आप लोग you guys are facing issues, problems की समझ में नहीं आ रही हैं चीजें या पढ़ने में दिक्कत हो रही है. मुझे just do let me know. And I think we should start, and I'm posting the first question here. The first question is okay about the spin doctors. Question 1 says spin doctors is used in a negative sense to refer to. And your options are, I'll post the options here. Your options are option A, news reporters, option B, legal counsels, option C, advertisers, या फिर option D, PR professionals. So you have to tell me कि spin doctors किसके लिए use होता है. इस क्वेश्चन को हम अलग तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं कि स्पिन डॉक्टर्स इज सिनोनिमस टू, इसका पर्यायवाची क्या है. इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं, घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं. तो इन अ सिमिलर फैशन दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, दिस सिनोनिम कैन बी आस्क्ड अबाउट इट. इट्स सिनोनिम कैन बी आस्क्ड. So I'm looking for answers. Your options are A, news reporters, B, legal counsel, C, advertisers, या फिर D, PR professionals. And the question is about the term spin doctors. Okay, Guru is saying option B, legal counsels. Well, any other answer? C, Gunjan is saying C. Some people are saying D. Okay, well, here the right answer is option D, PR professionals. PR professionals कहें उन्हें या मीडिया कंसल्टेंट्स भी कहते हैं PR प्रोफेशनल्स को. और ये लोग होते हैं जिनको कहा जाता है दे डेवलप मिसलीडिंग मैसेजेस टू प्रमोट और to promote something, their organization maybe, or some product, and they are referred to as spin doctors or spin misters, spin meisters. And this might be done using a catchy slogan or sound bite that can help to persuade the public of the company's biased point of view. तो कोई slogan बना करके या फिर कोई जिंगल बना करके, कोई साउंड बाइट बना करके they tend to promote or mislead the public in order to publicize their company's biased point of view. So they are known as the spin doctors. Now we move on to question number 2, and that says that if a publication is half the size of a broadsheet, you can see if a publication is half the size of broadsheet,
It is called A is tabloid B. So they are asking कि जो normally broadsheet होती है उसका अगर half size का कोई publication है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? And your options are tabloid, digest, single dummy या फिर double dummy. And this is a very direct question. I don't think I need to explain this question. और इसको बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप सबने अपने ग्रेजुएशन में, आई एम श्योर, अगर ग्रेजुएशन में मास कॉम था तो पढ़ा होगा, और नहीं तो मास्टर्स में तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिकेशंस क्या होते हैं. Very good. Yes, the correct answer is option A. So many of you have given option A as the correct answer. Gunjan is saying that she cannot see questions. Gunjan, you can see the questions in the comment section only. Today the screen sharing technique is not working. Screen share नहीं हो पा रही है, तो आप अपनी screen पे questions नहीं देख पाएंगे. I am posting them in the comment section, so you can refer to the questions there. I hope now it's clear, guys. आपको comment section में जाके ही questions देखने पड़ेंगे. When I speak, I also put the question in the comment section. So from there you can see. And yes, the right answer is option A, which is a tabloid. Now let's move on to the next question, which is question number 3. And it is about the advertising spiral. Now, I don't know how many of you have studied about the advertising spiral or not, but this is a very important topic as far as advertising is concerned. एडवर्टाइजिंग स्पाइरल में से आपके क्वेश्चंस आते ही हैं, हर साल एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है इसमें से, क्योंकि दिस इज something very important that any person belonging to advertising should know. अगर आप प्लान करते हैं कि आगे आपको MBA में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी आपको ये टॉपिक आना चाहिए. इफ यू प्लान टू गो टू सम एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर जॉब्स, then also you should know about the advertising spiral, क्योंकि आपके इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो the question here says after the introductory stage the advertising spiral moves towards, option A is retentive stage, option B is the new pioneering stage, option C is the competitive stage, या फिर option D is the rejection stage. Now they are talking about the कि आफ्टर इंट्रोडक्टरी स्टेज कहाँ पे स्पाइरल मूव करता है. तो ऑब्वियसली रिजेक्शन तो नहीं होगा, इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद रिजेक्शन तो नहीं आएगा. सो ऑप्शन डी तो यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाता है. Many of you are saying option C, that is the competitive stage. Well, yes, the option C is right. आपका इंट्रोडक्टरी स्टेज के बाद दी एडवर्टाइजिंग स्पाइरल मूव्स टुवर्ड्स दी कॉम्पिटिटिव स्टेज, और उसके बाद आता है रिटेंटिव स्टेज, एंड देन कम्स दी pioneering stage followed by rejection stage. तो आपको if you want you can note it down somewhere कि introductory stage, then comes the competitive stage, then comes the retentive stage followed by pioneering stage, further followed by rejection stage. तो rejection stage आपका लास्ट में आता है. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ सीक्वेंस, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाए कि अरेंज दी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ advertising spiral. So you should know that. So I hope you guys have noted out कि कौन कौन से स्टेजेस हैं और किस तरह से एडवर्टाइजिंग स्पाइरल वहां पे मूव करता है. प्लीज नोट इट डाउन अगर अभी नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. Now let's move to question number 4. And question number 4 says communication audit is commonly employed in the field of. Now they are talking about communication audit here. And the options given to you are option A, advertising, option B, public relations, option C, newspaper publishing, या फिर option D, broadcasting. So the question is asking about the communication audit. So how many of you know what communication audit is? If you know, well and good. If you don't know, please again I will say, please go through it. Uski theory पढ़ लीजिएगा, read it. And I think we have already done a video on this,
by the assistant professor of IGNU पद्मिनी जैन. हमने एडवर्टाइजिंग पे एक वीडियो किया है एक्सपर्ट के द्वारा. उसके अलावा हमने पब्लिक रिलेशंस पे भी वीडियोस किए हुए हैं. सो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस फॉर द थ्योरी पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड PR. Option, I'm getting option B and option C. Some of you are saying B, some is saying C. Well, C is not the right answer. And I'll give you the definition of communication audit. It is a process that companies go through in order to determine how good their communications are. And communication basically involves a company or organization to send and receive information or share it with varying audiences. So this is the definition of communication audit. Well, yes, option B is the right answer here. Normally public relations में communication audit का use होता है. So yes, option B is the correct answer here. Anushka and Gunjan have, and temporary productions has also given the right answer, which is option B. Now let's quickly move on to the next question, which is question number 5. And question number 5 talks about the online advertisement methods. Again, we have covered this in the theory part, which was done by our expert Padmini Jain, who is an assistant professor in IGNU. So you can go through that video. I will also link the video. I'll give the link in the description box as well as in the video when it's uploaded, so you can go through that. And it is asking which of the following are online advertisement methods through which advertisers attempt to drive traffic to internet sites. And options are option A banner, option B CPM, option C is SEO, and option D is CPC. Now this is something which is of general awareness also. जरूरी नहीं है कि आपने एडवर्टाइजिंग की थ्योरी पढ़ी हो तो ही आपको ये क्वेश्चन का आंसर आए. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ऐसे भी आता हो, क्योंकि ये बहुत ही जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मेथड्स के लिए एडवर्टाइजर्स क्या टेक्निक यूज करते हैं टू ड्राइव ट्रैफिक ऑन देयर इंटरनेट साइट्स. So, okay, I'm getting D, C, A as answers. Well, let me tell you. First, I'll tell you the full forms. Banner, आपको पता ही होगा, top पे रहता है. Then there is CPC, which is cost per click. Then there is SEO, which is search engine optimization. And the right answer here is option C. Nishipriya and Anushka have given the right answer, which is option C. Search engine optimization का use होता है by the advertisers to attract traffic on a particular website. Online advertising methods में this is a very common method. अगर आप थोड़े भी tech savvy हैं तो मुझे लगता है इसका आंसर कोई भी दे सकता है. This is a very general question. Now let's move on to question number 6. Question number 6 is about the assertion and reasoning. So just read the question carefully. I always say कि question जल्दी जल्दी पेपर करना पड़ता है, लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है और पेपर 1 और पेपर 2 कंबाइन आपको मिल जाता है, so you can very easily do the time management. You can divide your time between the two papers. And mind you that assertion and reasoning questions are very simple if you read them carefully. Each and every word has a hidden meaning और आपको बहुत ध्यान से उनको पढ़ के करना होता है. So here the question. Okay, the question I've posted already. I don't know if you can see or not. I think you cannot. Okay, so here is the assertion. Assertion में पूछा गया है कि as a management function, public relations can evaluate the options, opinions, and attitudes of both internal and external publics. So this is the assertion, and let me post the reason for it.
Reason given is it gives an opportunity of being sensitive to collective views of publics that differ from what is termed as public opinion. And कोड आपको पता है कि कोड्स क्या दिए जाते हैं, फिर भी मैं पोस्ट कर देती हूँ कोड्स को. You can see the codes here. Now, assertion में they are saying कि as a management function, public relations can evaluate the options, opinions, and attitudes of both internal and external publics. So, I think अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें तो yes, public relations का जो management function होता है, that is उसका basic crux ये होता है to evaluate the options, opinions and attitude of both internal and external publics. हमने internal, external के बारे में बात की है again in a video by our expert Dr. Tanu Dung, so you can refer to that video. And reason यहाँ पे given है कि it gives an opportunity of being sensitive to collective views of public that differ from what is termed as public opinion. Now, this doesn't make much sense with reference to the assertion. तो रीजन यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन assertion का जो स्टेटमेंट है वो मैनेजमेंट फंक्शन है. सो शॉर्ट ऑप्शन ए तो ट्रू है. So here the yes, Nishipriya, the correct answer is option C. A is true and R is false. क्योंकि अगर आप R को ध्यान से पढ़ें तो it is not making much of the sense here. So Nishipriya is right and I think others को भी आंसर इसका मिल गया होगा, which is option C. Guys, मुझे please आप लोग कमेंट करके बताइए कि what is the next topic that I should take. Last time मुझे बताया था, some of you suggested to take public relations and advertising for MCQs. Now, what are the other topics that you suggest for me? Please let me know in the comment section before I proceed further. And also let me know about the questions, about the kind of questions that I ask. Do they benefit you? क्या ये videos आपकी help कर रहे हैं MCQs? या फिर आप लोग थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, या फिर इसी तरह MCQs के लाइव सेशंस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइव सेशन इज लाइक एन इंटरैक्शन इन द क्लास. द ओनली थिंग इज दैट आई कैन नॉट see you people, but you can see me. But anyways, through comments we do a healthy interaction. तो it gives you a reality check कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है. और मुझे भी अच्छा लगता है to interact with you, and your comments, your emails, your messages on my WhatsApp, they all keep me motivated. So please comment करके बताइए whether this MCQ series is helping you or not, or you would like me to take up the theory classes also. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि if you want to connect with me, if you have any query, any doubt regarding the UGC NET exam or your mass communication paper, so you can contact me on my Gmail, which is gyan4media@gmail.com. Also, you can WhatsApp us. I'll put the नंबर इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आप उस नंबर को लेकर के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. आप लोग इसी तरह के और सैम्पल क्वेश्चंस भी ले सकते हैं विच आई हैव फॉर्मुलेटेड लुकिंग टू दी पास्ट 10 to 15 years ऑफ क्वेश्चन पेपर्स. तो एक क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, तो वो भी दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू गाइज, वो भी आप ले सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल होना, तो for that also you can inquire on our WhatsApp number or on our Gmail. So आपको वहाँ पे पूरी information मिल जाएगी. Anushka is saying history of print and electronic media. Okay, Anushka. I think last time भी आपने history of print या somebody suggested history of print. All right, I'll take up MCQs on that. Maybe next week I'll take up on history of print and electronic media. मेन स्ट्रीम सिनेमा विजुअल कम्युनिकेशन पे हम थ्योरी ऑलरेडी कर चुके हैं. जितना आपके यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, डिफरेंट सिनेमा मूवमेंट्स, विजुअल कम्युनिकेशन, इन सभी पे हम लोग थ्योरी कर चुके हैं. ICT, okay, ICT I'll take. And Vipul is saying role of a PRO in situation like COVID-19. So this is a particular topic of discussion. I think Vipul, इस पे तो हम लोग एक discussion कर सकते हैं, या
इस पे आप कुछ राइट अप लिख सकते हैं। और ठीक है, इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस, बट फॉर as far as UGC NET exam is concerned, आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक फॉर योर एग्जाम, बट येस, as far as COVID-19 pandemic and the lockdown situation, current situations are concerned, then yes, the topic is more or less important. So thank you very much for your feedback, guys. Now let's move on to question number 7, which is about the chronological order, and you have to arrange these in the correct chronological order. Okay, so you have to arrange this. Let me just post it. This is option A, because comment में you cannot write much of it, तो मैं एक एक करके options यहाँ पे post कर रही हूँ और आप लोगों को इसको correct sequence में arrange करना है, the sequential order of advertising copy elements. So they are asking about the advertising copy elements. Please arrange them in the correct order and tell me कि कौन सा option is the right answer here. So the question says the sequential order of advertising copy elements is, and option A is headline, amplification, proof of claim, explanation of claim, headline या फिर closure. So you have these options here and you have to arrange them in the correct sequential order of advertising copy element. You have to tell me that. So I'm looking for answers. This is question number 7. We are having 3 more questions. Vipul is saying option A. Okay. Anybody else for the answers? Option B. Okay, Ria is saying option B, Anushka is saying option B. Well, yes, the correct answer is option B. When we talk about the sequential order of advertising copy elements, then first comes the headline, then comes the headline amplification, followed by explanation of claim, followed by proof of claim, and then comes the closure. तो इसमें एक बात तो पक्की थी कि headline सबसे पहले आना था और closure सबसे last में आना था. सिर्फ बीच के जो factors थे वो आपको arrange करने थे. तो yes, the correct answer is option B, and some of you have already given that answer. Now quickly move on to question number 8. That is again about the chronological order arrangement, and you have to identify the correct chronological order of establishment of advertising agencies of the following. So here the name of the advertising agencies is given here and you have to arrange them according to their establishment. So question option A I have posted, option B I have posted. Moving to option C. Here comes the option C, and then comes the option D. Okay, so the options given are option A is Chaitra, Leo, Brunetta. Then comes the other agencies. You can read from the text given. Trikaya Grey Advertising India Limited. Then comes the Mudra Communications. Then FCB Ulka Advertising. तो आपको इनको इनके years के हिसाब से you have to arrange them in the right order. And I'll give you a hint that सबसे पहले आएगा Trikaya Grey Advertising India Limited. This is an India-based advertising agency which was established in 1977. तो सबसे पहले आपका ये ऑप्शन आएगा. तो अब आपको ओके ऑफ कोर्स तो एक ही में है ये ऑप्शन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. वेरी स्मार्ट गुंजन. The correct answer is option D, and I have given you the year for one of the advertising agencies. Rest you can find out. Mudra Communications is a very well-known
advertising agencies in India, and it is the youngest of all and a known एजेंसी. और बाकी जितनी भी एजेंसीज बची हैं उनके प्लीज ईयर्स आप लोग चेक कर लीजिएगा, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर अबाउट देयर एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स, तो यहाँ पे मैंने उन्हें मेंशन नहीं किया है, बट यू मस्ट चेक इट कि उनके ईयर्स क्या थे. ऑल्सो यू कैन जस्ट गो थ्रू अदर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो इंडिया में फेमस हैं या अब्रॉड की हैं लेकिन इंडिया में हैं, एंड यू मस्ट नो अबाउट देयर एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स, क्योंकि हो सकता है उनके बारे में क्वेश्चन आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि मैचिंग में आपसे इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए. तो जस्ट गो थ्रू इट. आई वाजंट श्योर अबाउट FB Ulka Advertising and Chaitra Leo Brunetta, so I did not mention their years. मुझे एक का पता है, त्रिकाया ग्रे एडवर्टाइजिंग, that is 1977, और मुद्रा is the latest. तो उसका भी ईयर आप लोग एक बारी देख लीजिएगा. Now let's move on to question 9. Question 9 says one of the major elements of a traditional public relations program is. They're asking about the elements of traditional public relations program, and the options given to you are option A, limiting expenses, option B, authoritarian observation, option C, situation analysis, या फिर ऑप्शन डी, इनकम सीलिंग. नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन क्योंकि पूछ रहे हैं ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम के मेजर एलिमेंट के बारे में, तो बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. ऑप्शन ए में उन्हें लगता है कि लिमिटिंग एक्सपेंसेस उसका आंसर हो सकता है मेजर एलिमेंट्स का. Charu is asking, will you share your WhatsApp number for notes? You can, I'll put the WhatsApp number in the description below once the video is uploaded. या फिर you can go to the previous live videos. वहाँ पे you can see the number is scrolling on the screen. Also in the description box, you can find that number in any of the videos. So Charu, you can refer to any video of ours. Okay, Surya is saying C, and many of you are saying B. Nishi is also saying C. Well, yes, the correct answer here is C, situation analysis. The correct answer for this question, the major element of a traditional public relations program is situation analysis. So option C here is the correct answer. Now, the last question for today, question 10. Let's move on to question 10. And it's on your screen. Question 10 is saying a special offer to the consumer contained in the body copy of an advertisement is identified as, and the options given are, this also we have done in the theory part. You must refer to those videos for your theory. The options given are option A, extra offer, option B, extended offer, option C, buried offer, या फिर option D, creative offer. So a special offer to the consumer contained in the body copy of an advertisement is identified as option A, extra offer हो सकता है, या extended offer हो सकता है, बरीड ऑफर भी हो सकता है, या फिर ऑप्शन डी क्रिएटिव ऑफर भी हो सकता है. सो दिस इज अगेन अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस. द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. अगर जिनको नहीं पता है उनको बहुत मुश्किल होगी इसका आंसर देने में, क्योंकि कुछ को एक्स्ट्रा ऑफर लगता है, किसी को एक्सटेंडेड ऑफर भी लग सकता है, बिकॉज दिस इज a very close options are given. So many of you have written option C here, and yes, the correct answer is option C here. Abhishek Mishra has written option C. Well, yes, the correct answer is option C, buried offer. So a special offer to the consumers contained in the body of an advertisement are identified as buried offer. So yes, Aparnika, the right answer is option C. So here we end up to this MCQ session, which was on advertising and PR. Next week on Wednesday at 12 p.m. we'll meet again. And जैसा कि आप लोगों ने suggest किया है history of
and history of electronic. So most probably I'll try to take up questions related to history of print and history of electronic. क्योंकि मैं आपको पहले से बता रही हूँ, तो I want you to be well prepared. Please तुक्के से आंसर्स मत दीजिएगा, थोड़ी सी पढ़ाई करके आइएगा हिस्ट्री ऑफ मीडिया से रिलेटेड. प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे. आप अपनी तैयारी से आएंगे तो आपको और मजा आएगा क्वेश्चंस के आंसर्स देने का. एंड इट विल बी मोर लाइक अ क्विज सेशन एंड वील सी कि कौन सबसे अच्छे से तैयारी करके आता है अगले हफ्ते same time. Or again, if you want to connect with me, please do write me on Gyan4media@gmail.com. मुझे WhatsApp पे connect कर सकते हैं. If you want to if you are seeking more sample questions या फिर online session, so you can contact us for those things on our WhatsApp or Gmail. तो अगले बुधवार मिलते हैं दोपहर 12 बजे हिस्ट्री ऑफ प्रिंट एंड हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए अपनी तैयारी के साथ आइएगा. तब तक के लिए हैप्पी स्टडी, स्टे सेफ, स्टे एट होम.